one here, and now I draw two lines on this. Both have the same direction. One has less distance, other has more distance. So are the two triangles same? Are these two lines parallel? No, na? Correct? Correct, beta? So they will not be parallel to each other. Don't make that mistake. CMG is the one where double arrows are put. Okay? So don't just remove that doubt from your mind here. Okay, let me just. Sir, regarding the Bolo, rate. bolo. So regarding the rate, we took this transferred PL to the 6 o'clock fix. Regarding the rate, what do you mean by regarding the rate? So regarding the rate, you told that Rate, once the triangles are formed, then we are reading from those triangles, beta. If one triangle is for half an hour, other is for 1 hour, right? yes, Yes sir. or no? Yes, sir. Correct. So either you can say this distance is rate because this is the drift in 1 hour, or you can read this full as drift for 1.5 hours and divide by 1.5 to get the rate. Choice is yours, right? Oh, okay, sir. Understood. Okay. Anything else, class? So that distance IG divided by 1.5 will be the rate, sir. That will be the rate, but if you don't have time, you can use this 1 hour triangle. You can measure from here to this much only and give rate, right? Because this will be rate, na? 1 hour triangle. Yes, sir. Yes, sir. So it's your choice, whichever way you want to give, right? So is the fish triangle clear, beta, now? Let's have the last time. Yes, sir. Quick review. Quick review. Draw the first PL, draw the third PL. Mark A, mark B. Mark C, mark D. Get point E. Use these double arrows, broken lines. They will help you reduce confusion. Then get F. Then get G and H. Draw EH, the ratio line. Draw the second PL and get the fix at the time of second PL, that is 6 o'clock in this case. Now draw the current through 6 o'clock position between transferred PLs. We got point I and J. From I, that is on the first PL, draw to the first PL. CTS, get the fix. From J to the third PL, get the fix. Get the CMG and complete the triangles and answer the questions that are asked to be answered from these triangles. So thereafter, once the triangles are made, it is okay. Now also, I've also told you that if you get E, after that, if you're drawing the current and you face problem, that means your position lies on the opposite side of E. You can quietly shift over to the other side without even wasting any time. It doesn't take more than 10 seconds to shift your working to the other side. One doubt, sir. हाँ बोलो. सर जब ये करंट आप जैसे बता रहे 035 के जगह 220 रहेगा, then you are shifting the CTS line above E. तो in that case उसके आगे का मतलब जो हमको तो ऐसे ही हो जाएगा ना प्लॉट. second position line. Then rest of the working is same. Then there is no problem, no. 6 o'clock. ये 6 o'clock वाला जो अरे तो 6 o'clock के लिए पोजीशन ऊपर आएगा. पीएल ये नहीं होगा ना. पीएल फिर सुटेबल पीएल होगा ना बेटे ऊपर. अच्छा सर. You are saying I'll change the current पर पीएल यही रखूंगा, ऐसे थोड़ी होता है. The 6 then middle PL will cut on top, right? Yes sir, in that case it will cut on top. It will cut on top. Now PL, the question would change, but I was just telling you that, see, up to E you can start anywhere because A is being randomly picked, right? A was randomly selected point, right? But your second PL also 6 o'clock fix मिलने के बाद 6 o'clock fix मिलने के बाद क्या? वो समझ गया सर. समझ गया सर. E ऊपर रहेगा, E के ऊपर पोजीशन रहेगा तो वो PL भी ऊपर ही आएगा.
मैं सिर्फ ये पिक्चर दूसरा पीएल भी ऊपर ही करने की काटेगा कोशिश ना कर रहा बेटा था फिर। कि अगर करंट 220 वाला है। हाँ जी तो सर, फिर वो समझ देखिए गया फिर मैं। 6 o'clock का सिर्फ ये ये पीएल सोच नहीं रहा हो था सकता कि ना अगर बेटा। वो दिस करंट पीएल दूसरा is डायरेक्शन then this रहेगा, PL is not possible na then. If your plot is going on above E, then this Yes, 6 sir. o'clock PL is not possible na. This one existing PL, right? yes sir, that understood sir. हाँ वो समझ गया सर, वो तो तो होगा क्या नहीं नहीं क्योंकि समझे मुझे बताओ, पोजीशन व्हाट इज द फिक्स डाउट? मिलेगा, दूसरा पीएल होगा, सेकंड पीएल। बेटा rest of the working सर is जैसे same. सी और Points will continue with the same thing ना बेटे. सी Points will continue to be same ना working. जो यही जैसे working सी और रहेगी. डी जब ऊपर A लेके B जाते हैं, C same point बेटा. A B C D E F G H I J. You have gone up to point J, right? Correct. Your marking of the points will remain the same. The order will remain the same. It will not change. Okay, so don't worry about it. Nothing is going to change. But my biggest problem with the boys on this or the students on this particular method is you should be able to pick out this method and this thing I use it understood. only if this is the only option. Don't make hasty decisions and overlook the possibility of a 3-point bearing or a running fix, and in a hurry just entangle yourself in this mess. Don't do that. This is only when running fix and 3-point bearing options get exhausted, they don't apply, then you can explore if this is what is to be applied. Is that clear, beta? That is the biggest issue out here, nothing else. This is the question that day. I think this we have discussed already. Whilst yeah, this was discussed that day when we were saying what course to steer or something. Make good 073. This we had discussed in the class earlier. Yeah, okay. Okay, any more questions on fish triangle, beta? Let me send you the questions on fish triangle. How many I have? I don't know. This is the one fish triangle. Okay. It has 2 questions. I think first one we might have done. Has it reached you, beta? First one we have already discussed. You can plot and check. Look at the second one, which is have you seen reached this question assignment has reached you, right, beta? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Received, sir. Okay, now question number 2. The first one we've already discussed. At 1900 hours. So first read that question with free mind and see whether it fish triangle question, because here it is in the assignment. So don't blindly do it. At 1900 hours, while steering 062 degrees true compass, Ballycotton Island Light bore 320 degrees compass. At 1930, it bore 274 compass. And at 215, Minehead Light bore 000 degrees compass. Current set 101. Calculate the course and speed made good and the rate of the current and the 3 positions. Obviously, beta, first you'll have to correct all the compass bearings to true before you plot. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. They are not meeting at one point. Why? Because 2 lights are from Ballycotton, the third is from Minehead. They will never meet at one point then. So your 3-point bearing is gone. Other than that, you have only 3 elements. Therefore, it qualifies to be a fish triangle question. So you guys can plot this. And if you have any doubts in this, we can address. But I have already told you that if you are going on the other side of E, then don't get panicky. Just switch your side and start plotting on the other side. And the earlier part, you can, if you want, you can rub out from there. Or you can just put A dash, B dash, C dash, D dash and leave that there. Okay. And come to the other side of E. Sir, Yeah. one एक क्वेश्चन था सर, एक बोलो Can I डालो ask? ग्रुप
ग्रुप में डालो बेटा. नहीं सर, आई हैव अ डाउट. हाँ. ये इन दिस ट्रायंगल ना सर, ये the one you showed in the screen now, here इसमें सर CTS था and we allowed it. ऐसा Allowed कोई it केस means? means CTS was given and हाँ. current set was given, so we allowed this, no sir? मतलब we find out the rate. अब इसमें काउंटर करना है सर, तो काउंटर का कोई क्वेश्चन रहता है या फिर ऑलवेज वी गो फॉर अलाउइंग? कहाँ पे हमने अलाउ किया? we didn't allow, we nor did we counter. We just followed geometry to get the ratio line here. We did not follow the concept of vector triangle which you are talking about, counteracting or allowing. Did we use that word anywhere, beta? नहीं ना. नो सर, बट CTS हाँ. दिया हुआ है, engine speed दिया हुआ है सर, like you said कि So when we were talking counteracting and allowing, that was in context to the vector triangle being drawn there, right? yes sir. Here, are you drawing the vector triangle? You are not drawing the vector triangle. You have used your geometry concepts to get a ratio line EH, which will divide this given set. Anywhere you draw between the transferred PLs, it will divide in that ratio. So you have not used the concept of counteracting or allowing. Counteracting, allowing concept would have been used if there were 4 elements given to make the triangle. Yes or no? Yes. Yes, correct sir, correct. So why this counteracting and allowing word is bothering you? If this was to be used, then 4 elements would have made my life much easier. Okay. Since we could not use counteracting and allowing, that's why we are into this mess of fish triangle, right? Yes sir. Okay. So don't unnecessarily get confused, beta. Okay, any more questions? One question from the revision assignment. हाँ बोलो. So question number 3. Question. Okay, I'm closing this one in the sense. Okay, question number 3. Let me just open it. Question number 3, revision assignment. सर ये 5th असाइनमेंट आपने नहीं भेजी शायद से ना? भेज दी होगी बेटा, पक्का भेजा होगा. पक्का क्या था? ये नहीं, रेंडेव्यू नहीं भेजा था क्या? ओके, अभी भेज देता हूँ. नहीं भेजा है सर. अभी लो बेटा. ओके, सॉरी देन आई मिस्ड आउट. तो सॉल्यूशन आप नहीं भेज सकते हैं सर? सॉल्यूशन है ही नहीं बेटा, मैं रखता ही नहीं. अगर होता तो भेज देता, मैं रखता नहीं बेटा. इसका क्या आंसर जो मेरे पास है वो मैंने डाल दिए. इसका सॉल्यूशन क्या रखना? फिर तुम क्या करोगे अगर सॉल्यूशन भी मैं दे दूंगा तो? Then what are you going to do? Read the solutions? सर आपने जो एग्जांपल दिया फिश ट्रायंगल वाला जो असाइनमेंट में, उसमें ये ई के ऊपर जाने वाला और करंट दूसरे डायरेक्शन में जाने वाला है क्या क्वेश्चन? बेटा वो तो आपके पॉइंट पे डिपेंड करेगा ना, आपने पॉइंट क्या लिया. नहीं समझे? तो वो फिश ट्रायंगल में समझ गया सर. मेरे को ये कि अरे करंट तो अगर दूसरे कमाल कर रहे हो. What I'm saying is, in the same question, if somebody takes the point at a different thing, then it will be opposite for him, right? Yes sir. In the question that I have done on the board, which we discussed in the board, if somebody had taken A right up, then for him the same question will become ulta, na? जैसे सर C और D, जो C और D नीचे. अरे भाई, whether your choice of A is correct or not, that will depend on your plot. If it is correct, then current will fit in. If the choice of A was wrong in sense that it is on the other side of E, current will not fit in. That's all I'm saying. So where you choose A, that will decide. No, there cannot be a question. How will the question say where to take A? Question will not dictate where to take A. Yes or no? Yes sir. Question भाई, ये तो तुम्हारे A पे डिपेंड करेगा ना, तुमने A कहाँ पे लिया बेटे. हाँ जी सर, वो समझ गया. अरे मेरे भाई, तुम अगर तुम ये जो क्वेश्चन है, सपोज तुम, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज यू आर अननेसेसरली गेटिंग कंफ्यूज्ड. if the E is coming somewhere here, let me just randomly do whatever it is. You see, let us say
E is first line is transferred here. Third line is transferred, let us say here, the intervals are accordingly. Now see, if E is coming here in this plot, then if somebody has taken A here and another person has taken A here, now it cannot be correct for both. For one it will be correct, for the other one he'll have to change side. Yes or no? Yes, sir. Yes. Correct, beta? हाँ जी So, sir. so this is C, this is C, this is D, this is D. So if the current happens to be, so one student has done this one, other student has done this one. So if the current happens to be now, let us say 030, so for this student, the current fits in well. For this student, the current does not fit in. So he has to come down here. And on the other hand, if the current was, let us say 230, 230 will fit for this current student. It will not fit for this student. He'll have to go up. So there cannot be a question. This will depend on where you took A and how it was eventually with respect to E. Yes or no? ये सर जो ट्रायंगल आता है ना सर ए सी और जो यार तुम्हें A से B, B से C, C से D जाना आता है? You have to just continue going like that. No, what is the, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा. If you have to go from A to B, B to C, C to D, what is the issue? इश्यू ये है कि नीचे सी और डी एक डायरेक्शन में, ऊपर जाके वो डी और सी हो जाता है. तो क्या हो जाता? हो जाने तो क्या हो गया फिर? C C रहेगा, D D रहेगा. On the ship, if you're looking forward, then your port side is to your left. But if you look aft, will your port side still remain to your left? Port side will still remain port side only, na? नीचे वो ट्रायंगल सेपरेट रहेंगे, ऊपर वो थोड़ा मर्ज हो जाएंगे. यार सवाल समझ में नहीं आ रहा मुझे. I don't know what a question are you asking. I have taught you in such a simple way that first plot A, then B, then C, then D, then E, then EF. Then where is the question? Why are you looking at these two simultaneously? Why are you mixing up them here together? मतलब तुम, can you plot the question I've given you rather than wasting your time on this and unnecessarily getting entangled and confused? Problem ये है बेटा, तुम ना, you just want to talk on the paper and screen. You don't want to plot with your hands. If you plot the other question, you can't. तो ये second question plot करो. Doubt है तो बताओ ना, because I can't answer this question which you're asking. हाँ जी सर. If you have understood how to go from A to B to C to D to E to EF, then where is the doubt? There cannot be a doubt. Okay. Sometimes we unnecessarily stretch our imagination. I will not say that you are doing wrong, but we stretch our imagination to put ourselves in mess, nothing else. यहाँ पे रिवीजन असाइनमेंट का कौन सा क्वेश्चन बेटा? अभी क्वेश्चन नंबर 3. हाँ, क्या हुआ इसमें? ये तो तूने मुझसे उस दिन भी पूछा था ना, 8-12 है ना? हाँ. तो क्या हो गया इसमें? हाँ सर, इसमें मैंने दोनों को रैंक को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद एंकल पर ड्रॉ कर लिया, साइकिल पर ड्रॉ कर लिया. और सर ये लेकिन हुकर्ड का जो सर मैं निकाल रहा हूँ वो 21.5 आ रहा है. तो उसके बाद मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ सर, क्या करना है. नहीं तो what is hook, the 10-14 पे what are you getting? Circle. 10-14 पे you're getting a position circle, correct? Yes sir. And what are you getting at 8-12? 8-12 what are you getting? एक्चुअली सर उसके आगे मैं कर नहीं पा रहा हूँ सर. अरे I'm asking, मैं उससे पहले का पूछ रहा हूँ. 8-12 पे what have you got? पोजीशन. मैं उसके आगे का नहीं पूछ रहा हूँ, उससे पहले का पूछ रहा हूँ. What have you got at 0812 is my question, and that is before 10-14. That is not after 10-14. हाँ जी सर, इसमें मतलब प्लॉट करना सर, मतलब होकर को. और my question is, what did you get at 8-12 beta? Please answer that question.
What have you got at 812? बोलो भाई. हाँ सर. हाँ सर, क्या 812 पे what have you got based on the information in the question? That is what I am asking. You have to answer. हाँ क्या जवाब तो तुम्हारी तरफ से expected है भाई. सर मैंने सर इसे क्वेश्चन में दिया हुआ है. मैंने I am को asking और my बेटा तुम्हें हिंदी इंग्लिश में किस में बात करूं मैं? क्वेश्चन आपको 812 पे क्या दे रहा है? पोजीशन लाइन दे रहा है, पोजीशन सर्कल दे रहा है, किस मेथड से क्या दे रहा है 812 पे? कौन से मेथड से? पोजीशन सर्कल दे रहा है. Which method? पोजीशन सर्कल. Which सर बाय method? द एचएसए. बाय एचएसए. So you have drawn that? यस सर. Have you drawn? हाँ सर ड्रॉ कर दिया उसको. Okay. What does the question give you at 1014? सर 10 सर में वो कह रहा है कि letter maintaining same course and speed hook head light house dips at 1014. तो सर मैंने इसका एनआर और What do you get at 1014 is the question. सर अनदर पोजीशन. So when you have two position circles of different timings, what method are you supposed to use? सर एक्चुअली तो इसमें बहुत बड़ा सर्कल बन रहा है सर. 21.5 का बन अरे रहा है. यार छोड़ दो ना. Your question I'm asking you something else. You are telling me circle बड़ा बन रहा है. Did I ask you that? When you have two position circles of different timings, which method is applied? ट्रांसफर ऑफ पोजीशन सर्कल. कौन सा वाला सर्कल ट्रांसफर करोगे? 812 वाला, 1014 वाला? सर मैं ये तो कंफ्यूज हो जा रहा हूँ सर, कौन सा ट्रांसफर करना है. तुम आगे की तरफ चलते हो नॉर्मली या पीछे की तरफ? सर आगे की तरफ. तो अगर तो कौन से को आगे की तरफ किसको ले जाना पड़ेगा? 812 को या 1014 को? सर 1014 को. 1014 को आगे ले जाओगे तो 812 को पहुंच जाएगा वो. 1014 को आगे ले जाओगे तो 812 को पहुंच जाएगा वो. नहीं सर, अगर 812 से चलेंगे तो 1014 को पहुंचेंगे. तो फिर आगे कौन सा, आगे की तरफ कौन से को ले जाना पड़ेगा? 812 को या 1014 को? 812 को. तो देन हैव यू ट्रांसफर्ड दैट पोजीशन सर्कल? सर वो तो सर नहीं कर पाओ सर, मतलब कैसे करना उसमें नहीं है. बेटा नहीं कर पा रहे तो वीडियो देखो और उनमें देखो. क्यों तुमने पोजीशन ट्रांसफर और पोजीशन सर्कल की क्लास नहीं अटेंड की? रनिंग फिक्स नहीं की थी क्या अटेंड? सर किया था, लेकिन सर वहाँ पे जैसे कि अब इसके पहले हमने यार 812 के पोजीशन सर्कल को 1014 पे ट्रांसफर कर लिया तुमने या नहीं? दैट इज माय क्वेश्चन. और वो क्लास अटेंड की है तो वो आना चाहिए ना फिर. यू विल अगेन से 1014 का पोजीशन सर्कल बहुत बड़ा आ रहा है. आई एम नॉट आस्किंग दैट कितना बड़ा पोजीशन सर्कल. आई एम आस्किंग यू, हैव यू ट्रांसफर्ड 812 पोजीशन सर्कल टू 1014? yes or no? And if you don't know, then please go back to the videos, learn it and do it. Okay. This method is transfer of position circle. Running fix involving transfer of position circle. Understood? सर जो पोजीशन सर्कल ट्रांसफर करेंगे तो सर मतलब जहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल. अरे भाई, running fix by transfer of position circle has been dealt with in ample detail. Please don't drag me back to the start line every day, Tariq. This is not fair. I can only push you. I cannot hold your hand and write your MMD exams with you here. This is not a fair expectation. Excuse me, sir. हाँ बेटा.
सर अब जैसे इस क्वेश्चन में कंपास दिया है डेविएशन का 2 वेरिएशन, तो नॉर्मली तो फर्स्ट ग्लांस में यही लगता है कि एरर निकाल के ट्रू बेरिंग लगा के वहां पे फिक्स फाइंड कर लो। हाँ। तो इसीलिए पूछ रहा हूँ भी मतलब वो नहीं बेटा, तरीका। that is one area of doubt, but again if you remember one of the questions where we had done, पहली बात तो जब तुम ये जो 182 डिग्रीज ट्रू दिया हुआ है तो इसमें भी तुम्हें डेविएशन निकालने में मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? बिकॉज यू कांट एंटर विद 182 एंड गेट डेविएशन, नंबर 1, अंडरस्टूड? You can't get the deviation against 182 directly from the deviation card. Do you agree? Yes sir, yes sir. Okay, that is one. Second is, since I am not sure, there is an element of doubt whether there was heading was 182 or not. It may be 182 degrees true then, but I'm not sure. So I just want to hedge my risk, because if I use horizontal angle, then there is no risk at all. Even if it was 182, still it's fine. If it was not 182, then also it's fine if I'm using horizontal angle, right? Yes sir. So Okay. सेक्शन एंगल में कंप्लीट पे कर सकते हैं ना? Horizontal angle में तो you'll use the compass angle, compass bearings you'll use, no? Yes sir, वो पार्ट बच जाएगा कन्वर्जन करने हाँ. का। So when you use transfer of position circle concept, it is a safer bet. Why? Because when I tell you get error for 182 degrees true, you will not be able to get for 182 degrees true directly. First you have to go to magnetic, then amend the deviation card and get deviation, and then whether that will match with what you get with horizontal angle or not is a big question mark. Okay, so just to be safe, because when you use horizontal angle PC, it is not dependent on 182 degrees true tha ya nahi tha. That element gets removed completely. Okay. Okay beta. Okay sir. Usually if you see in one of my assignments, I said vessel then steered. You remember in one of the class questions we said vessel then steered, and then we said we'll use horizontal angle here because we do not know the heading at that time, right? But here, since it was an MMD question, I didn't want to change the language. But yes, what you are saying, that element of doubt is there. But even getting error for 182 degrees true, many of you will end up making mistake. That much I can tell you. अगर मेथड से नहीं हो रहा है तो एरर निकाल लेना सर। हाँ बेटा बोलो। हाँ सर मैं ये कह रहा था सर, ट्रांसफर से लास्ट हमने क्वेश्चन किया था सर एक टस्कर लाइट का, वहाँ पे हमने सर उसपे लाइट बेटा now that you please revise by yourself, Tariq, I cannot just now take you start. Tomorrow you'll tell me, can you tell me how to convert compass bearing to true bearing? No sir, So just it's not a fair. No, it's not a fair expectation. These things have been dealt with in ample detail in questions. नो सर, एक्चुअली सर जस्ट मैं सर ये कह रहा हूँ कि सर जैसे कि हम किसी भी लाइट हाउस का रेजिंग डिस्टेंस जो उसको सर्कल ड्रा करते हैं, उसके बाद हम कोड ड्रॉ करते हैं। What was said in the class? How do you transfer a position circle? How was it taught in the class? Tell me. What was said in the class? सर मुझे क्या समझ गए? क्या तुम कह रहे हो समझ गए? क्या समझ गए? बस समझे ही तो नहीं हो, प्रॉब्लम ये है। क्या समझ गए? नहीं सर, I am asking you, how do you transfer a position circle? Can you explain? अगर समझ गए तो बताइए। सर मैं सर इसमें सर ये क्या करते हैं, जो जैसे लाइट हाउस है उसका जो सर्कल जरूरी नहीं लाइट हाउस, सर्कल कैसे भी आ सकता है। आई एम आस्किंग यू हाउ डू यू ट्रांसफर अ पोजीशन सर्कल, दैट्स माय क्वेश्चन। सर उसमें लाइट हाउस, अरे लाइट हाउस जब को मारो गोली ना यार, एक सर्कल है उसको ट्रांसफर करना है, उसको कैसे ट्रांसफर करूं ये बताओ। सर उसमें सीटीएस और अगर करंट है तो करंट लगाने के बाद किस पे लगाओगे? सर सीटीएस और अगर सीटीएस किस पे लगाओगे? सीटीएस और करंट सर्कल के सेंटर में। सी प्रॉब्लम ये है, तुम या तो क्लास में सुनते नहीं हो या तुम क्लास नहीं अटेंड करते हो। देयर इज समथिंग मिसिंग, यू नो, सम लिंक इज मिसिंग।
सर लाइट हाउस का सेंटर से सीटीएस ड्रॉ अरे करते लाइट हैं। हाउस है ही नहीं, मैं तो एक सर्कल को ट्रांसफर करा रहा हूँ यार, छोड़ो ना, फिर तुम लाइट हाउस में जा रहे हो बार बार। मतलब आई डोंट नो व्हाई यू आर गोइंग बैक एंड फोर्थ ऑन द लाइट हाउस. Now you tell me, I want to transfer this circle. Now you tell me, what do I do? This is the circle. This is its center. There is no lighthouse. CTS 120 degrees true. Engine speed 10 knots. Current 120, 120, say 210 degrees into 2 knots. Now tell me, how do I transfer this position circle after 2 hours? This is position circle at 800 hours. I want to transfer it to 10 o'clock. Now tell me what to do. ओके सर। सर पहले हम सेंटर पे इसका सीटीएस ड्रॉ करेंगे। तो फिर सेंटर बोलो, लाइट हाउस क्यों किए जा रहे हो जब से यार? हाँ सर, सेंटर से ड्रॉ करेंगे। तो उसके अब बाद तुम्हें तो ट्रांसफर करना आता है? हाँ सर, मैं सो बताऊँ जो उस क्वेश्चन में 8-12 का सर्कल है उसको ट्रांसफर कर सकते हो 10-14 पे, यस और नो? सर वही चीज सर नहीं कर पा रहा, क्योंकि सर यहाँ पे मुझे सेंटर, ये सर यहाँ जो पे 8-12 का सर्कल ड्रॉ किया बिना सेंटर के कर लिया था? यू ड्रो दैट सर्कल विदाउट हाँ सेंटर? तो ओके सर, ओके ओके ठीक है सर, समझ गया सर भैया। हाउ डिड यू ओके ड्रॉ सर, 8-12 सेंटर सर्कल विदाउट सेंटर? टेल मी. हाँ नहीं सर, नो पॉसिबल। फिर ओके सर, ओके द सर, प्रॉब्लम समझ इज गया। यू गेट हुक टू लाइट हाउस. अब वहां लाइट हाउस नहीं है तो मैं क्या करूं भाई? सेंटर तो है ना सर्कल का? यस सर, नाउ अंडरस्टूड। सर सर ये क्वेश्चन नंबर 6 का, ये रिवीजन असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर शेयर कर देंगे सर। बेटा करो, किसी ने आंसर क्लिक लिखा किया है नहीं तो. हाँ बेटा, somebody was asking, डाउट बोलो. सर एक ग्रुप में ना क्वेश्चन है डबलिंग द एंगल का। सर वो खाली एक बार मतलब ऐसे रफ में let me see. अभी डाला है क्या? कहाँ है बेटा? डाल दो जरा दोबारा से, कहाँ है? एक ऊपर है? मिनट सर। दोबारा डाल दो एक बार. Let me take it.